Hey everybody, hello and अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया हुसैन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं and I share a lot of tips on makeup and on skincare and lots of different things, and I really hope that you are enjoying watching my videos. So you have to subscribe and press on the bell icon. Don't forget, ताकि आपको जो है वो latest videos की जो है वो updates मिलती रहें, notifications मिलती रहें, so that you don't miss out on any of the videos that I upload, especially जो आपकी request पे जो है वो अपलोड करती हूँ मैं और जो मैं वीडियोस बनाती हूँ. So again, one very requested kind of a video, a tutorial that you guys wanted to see is about lip liner. And even though of course lip liner एक ऐसी चीज़ है जो ख़वातीन जो हैं वो बहुत आसानी से लगा लेती हैं, but for some it becomes a bit confusing कि उसको कैसे लगाएं और अपनी लिप शेप को अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, और ख़ास तौर पे जो ombre lips वाली जो एक लुक होती है उसको जो है वो कैसे करें. So there are lots of colors of course which you can choose from, but generally lip liner के लिए जो है I prefer to choose like a color which is more towards my own kind of like more towards brown tones. It could be a light brown, it could be a dark brown, but I prefer generally कि अगर मैं कोई dark color लगा रही होती हूँ तो then I prefer to use like a purplish kind of a color. If I'm putting like a nude color, I use like a slightly beigey browny kind of a color, and if I'm using like a pink kind of lipstick, then I use like a slightly dark brown kind of a color. So अभी जो है वो मेरे पास एक ये लिप लाइनर है जो कि एक रिट्रैक्टेबल फॉर्म में होता है, ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, विच इज़ वेरी इजी टू यूज़ बिकॉज इसके अंदर आपको शार्पन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ऐसी आसानियाँ जो हैं वो हो जाती हैं. तो ये आपको इस किस्म की पेंसिल्स जो हैं वो ऑनलाइन भी मिल सकती हैं, आपको किसी स्टोर से भी मिल सकती हैं. तो आपको जो है वो पूछना है कि जी रिट्रैक्टेबल जो है वो लिप पेंसिल आपको चाहिए कि जो ऊपर नीचे जैसे कि बहुत सी ऐसी लाइक ब्रांड प्रोडक्ट्स होती है मेकअप में कि जो रिट्रैक्टेबल होती है, जैसे कि लिपस्टिक जो होती है वो रिट्रैक्टेबल होती है. तो आपको इस किस्म का जो है वो भले शॉपकीपर से पूछना है या आपको जो है वो ऑनलाइन जो है जब आप सर्च करेंगे तो आप जो है वो रिट्रैक्टेबल जो है लिप लाइनर का सर्च करेंगे. सो दिस इज़ अ रिट्रैक्टेबल लिप लाइनर इन अ स्लाइटली ब्राउन कलर, एंड आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट डूइंग माई लिप लाइन. जो मैं बहुत ज़्यादा अपने लिप से जो है वो बढ़ा कर लिप्स नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफाइंड जो है वो शेप ज़रूर दूँगी. एंड मेक श्योर दैट द वी इज़ काइंड ऑफ बैलेंस. ठीक है, इट कुड बी कि आपका लिप जो है वो एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचा है, सो आपको उस हिसाब से जो है वो उसको बैलेंस करना होता है. ठीक है, देन आई एम गोइंग टू स्माइल and I'm going to take this V all the way till the corner, okay? And I'm going to kind of curve it a little bit outwards so that it gives me a smiley kind of a shape. जब आप हल्का सा कर्व जो शेप बनाते हैं, like slightly curved like this, it gives you a really nice pouty kind of a lip effect over here, and it gives you a smiley look over here. And then आपको जो है वो साइड से जो है यहाँ लोअर लिप के साइड से आपको अंदर रहना है. ठीक है, don't come out. So I'm staying within my lip line, but I'm gonna come out a little bit here. So like here I'm coming out a little bit, okay? ये मेरी लिप लाइन है लेकिन मैं बाहर हूँ. ठीक है, here I'm in, here I'm out. So my lip line is done. I'm going to shade a little bit in the corner so that it gives me a really nice pouty look. And then I can draw like a line in the center, okay? जो कि इस लिप के जो यहाँ पे जो छोटी छोटी सी लाइक लिफ्टेड लुक आती है, सो ये वो लुक को जो है वो क्रिएट करता है. ठीक है, so here my lip line is done and I'm going to now apply a little bit of lipstick and lip gloss. And now here I have my own brand of lipstick which is called the Bling It Down matte lipsticks. और ये जो color है, this is Ooh La La, which is one of my
all-time favorite. It's like a really nice natural pink kind of a color. So ye jo which is the matte lipstick, which is the Bling It Down Ooh La La, I'm going to now apply that. And now my lipstick is done, and I'm going to top it up with a little bit of Bling gloss, which is again from my own brand. And this Bling gloss is Goddess, which is a lovely pink glittery kind of a color, and it's really going to add a little bit of a pop to your lipstick. And जो आपकी matte lipstick होती है, actually जब आप उसके ऊपर हल्की सी lip gloss लगाते हैं तो वो और ज़्यादा जो है वो long lasting हो जाती है, क्योंकि फिर बीच में से जो है अगर वो matte lipstick usually हट जाती है, so definitely अगर आप उसको हल्का सा moist करेंगे with a lip gloss, it's not going to get removed from the center. जब आप खाएंगे पिएंगे बात करेंगे पूरा दिन की लिपस्टिक लगी हुई है तो उसमें जो है वो बहुत चांस होता है कि मैट लिपस्टिक जो है वो सेंटर से हट जाती है. So if you're going to apply a lip gloss, you're really going to prevent that from happening. So here I'm going to use my Bling gloss called Goddess. Only in the center, just a little bit of a pop of color. Merge it with the top. तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिप ग्लॉस पूरे लिप्स पे लगाएं. आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द सेंटर. ओके, So I am all done with my lips, and I hope कि आप लोगों को जो है वो लिप शेप जो है वो आपको कैसे बनानी है, लिप लाइनर जो है वो आप कैसे लगाएंगे ताकि आपके लिप्स जो हैं वो थोड़े से और पाउटी लगें. And how are you going to blend in your lipstick? I hope कि you enjoyed today's tutorial, and keep watching my videos, and of course you have to subscribe and press on the bell icon so you don't miss a single video of mine. And I shall catch you next time on my channel. Keep watching, keep commenting, and love you all. Mwah.